Hello students, welcome to my channel. In last video we have discussed bryophytes, right, and the categories liverworts and mosses. Now the topic of discussion is pteridophytes, the first plant that have developed vascular bundles. When we talk about vascular bundles, means xylem and phloem. So till bryophytes there were no xylem, phloem, or even there were no true root, true leaves or true stem. So pteridophytes have got true root, right, true roots, true stems and true leaves as well. Now the discussion is how many types of pteridophytes are. Coelopsida, Lycopsida, Sphenopsida and Pteropsida. P is silent over here and here. Okay. So Coelopsida, P silent, Pteropsida, P silent. So Coelopsida, Lycopsida, Sphenopsida and Pteropsida. So what are the basic features of these pteridophytes? You have seen. They are classified as Coelopsida, Lycopsida, Sphenopsida and Pteropsida. The life cycle of a pteridophyte begins when the plant body, a sporophyte, bears sporangia, Sporangium. which are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. Sporophylls we have studied. However, in some genera like Equisetum, This is Equisetum. नाम याद रखेंगे, Equisetum. बहुत खास प्लांट है ये pteridophytes का. इससे क्वेश्चन बनते हैं. sporophylls might form distinct and compact structures called strobili or cones. Cones. The sporangia produce spores in spore mother cells by meiosis, Meiosis, you know. which germinate into gametophytes called prothallus. See, from this spores the plant body is developing, right? Here these are the spores, this, and here it gives generation of plant body and young gametophyte and then a prothallus. Pro means primitive, पुराना, कोई thallus पाउच जैसा स्ट्रक्चर बना दे, ठीक. उसके बाद पूरी प्लांट बॉडी बन जाती है. देखो कैसे प्लांट बन जाता है, ठीक है. A small, multicellular, free-living and mainly photosynthetic gametophyte which grows only in cool, damp and shady places. माउंटेन एरियाज में. The prothallus also bears the male and female sex organs, the antheridium and archegonium. नोट द पॉइंट. ये जो प्रोथैलस बना, इस प्रोथैलस में दो पार्ट हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, राइट. ये देखें, ये जो बड़े बड़े पार्ट आपको दिख रहे हैं इधर से लेफ्ट हैंड साइड में, ये सब क्या है? ये आर्किगोनियम है. ओके. और जो राइट हैंड साइड में छोटे पार्ट्स हैं, इनको क्या बोल दिया? एंथेरिडियम. तो एंथेरिडियम, आर्किगोनियम. आर्किगोनियम फीमेल, एंथेरिडियम मेल. प्रेजेंटेशन समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से. The antheridium produces the male gametes called antherozoids, Pterozoids. whereas the archegonium produces an egg. When released, antherozoids travel through water and eventually reach the mouth of the archegonium, where each one fuses with an egg to form a zygote. Note the point. Here for reproduction, pteridophytes also need water, right? From antheridium, sporozoids means kind of gametes, male gametes are traveling towards the archegonium and they are going to fuse with archegonium and to form zygote. This zygote develops into a young embryo, Archegonium. which further develops into a multicellular and well-differentiated young sporophyte, and ultimately into a mature sporophyte. This completes the life cycle of a pteridophyte, which is divided into the gametophytic phase and the sporophytic phase, the most dominant phase. Pteridophytes can be homosporous or heterosporous.
Noted. Homosporous pteridophytes produce spores of similar kind, Homo means same. जहाँ भी homo term आए means same type. Hetero means different type. while heterosporous pteridophytes produce two different types of spores, large or megaspores and small or microspores. Noted. Megaspores germinate into female gametophytes, which produce eggs, Note. while microspores germinate into male gametophytes, which produce antherozoids. The egg and antherozoid fuse to form a zygote, which develops into a young embryo, which then gives rise to a sporophyte. These pteridophytes occupy an important place in the plant kingdom, as they were the first plants to have true roots, True stem. stems and leaves, as well as vascular tissues. It is common to find trees such as pinus, अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की. जिम्नोस्पर्म जिन्हें कहा जाता है दीज आर फ्रॉम द एज ऑफ डायनासोर्स मीन्स मीजोजोइक एरा. करेक्ट. तो वो एक जुरासिक एरा था जिसमें डायनासोर्स रहते थे. उन्हीं के दौरान के जो हमारे पास अभी भी प्लांट्स हैं, पाइनस, साइकस, सिड्रस, ये सब क्या हैं? उस दौर के प्लांट हैं ये. इन्हें बोलते हैं जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म, पहले तो टर्म क्लियर कर लो. जिम्नोस और स्पर्मिया का मतलब क्या हुआ? जिम्नोस जहाँ भी नाम लेते हैं वहाँ का मतलब ही होता है नेकेड, राइट. और स्पर्मा मीन्स होता है सीड्स, राइट. तो नेकेड सीड्स की बात करते हैं. क्या समझें? जिम्नो स्पर्म्स. जिम्नो मीन्स नेकेड और स्पर्मा मीन्स सीड्स. नेकेड सीड्स, एक बात तो क्लियर हो गई. नेकेड सीड्स का मतलब हुआ इनके ऊपर पूरा फ्रूट कवर नहीं है, नॉट कवर्ड विद द फ्रूट बॉडी. ये क्या है? केवल सीड्स होते हैं, ऊपर से कंप्लीट फ्रूट नहीं होगा. इसे याद रखेंगे. इनका पूरा प्रेजेंटेशन है, देखें. cedrus and cycas growing in the cooler regions of India. All of them are gymnosperms. A group of plants in which the ovules are not enclosed by an ovary wall and remain exposed or naked before fertilization as well as post-fertilization when they develop into seeds. Noted. These seeds germinate to give rise to new plants. If you take a look at the morphology of gymnosperms, you will notice that most of them have tap roots. Taproot. Moreover, in some genera, such as Pinus, the roots have a fungal association in the form of mycorrhiza. देखें, कुछ ऐसे प्लांट जिम्नोस्पर्म हैं जो पूरा कंप्लीट टैप रूट सिस्टम होते हैं, मतलब लंबे लंबे रूट्स पूरी ज़मीन में होते हैं. और कुछ जिम्नोस्पर्म हैं, खासतौर पे पाइनस में, पाइनस के जो रूट्स में थोड़ी थोड़ी दूर पे है, ये देखें आप, ये छोटे छोटे क्या हैं? फंगस लगे हुए हैं. फंगस का एक जाल बिखरा हुआ है, नेटवर्क ऑफ फंगस. तो इसको क्या बोलते हैं? माइकोराइजा. ये देखो पूरा फंगस है, जितना भी आपको येलोइश पोर्शन आपको दिख रहा है वो क्या है? फंगस है वो. याद रखें. अब फंगस है, देखें, जिसको बोल दिया माइकोराइजा. पूरे टर्म को क्लियर कर रहे हैं कि माइकोराइजा मतलब कैसे नाम दिया है ना. देखें, माइकोराइजा नाम समझें. मैं टर्म लिख रहा हूँ माइको, MYCO, राइट, राइजा. ये हम बता चुके हैं पहले भी. माइको का मतलब ही हुआ व्हाट? माइको मीन्स फंगस और राइजा मीन्स रूट्स. रूट्स किसकी? हायर प्लांट की. एसोसिएशन ऑफ फंगस, याद रखेंगे, एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द हायर रूट्स, विद द या रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, इसको बोल देते हैं माइकोराइजा. और ये एक तरह का सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, मतलब म्यूचुअलिज्म है. म्यूचुअलिज्म मीन्स होता है कि दोनों ही बेनिफिट होते हैं एक दूसरे से, राइट. दैट मीन्स बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड टूवर्ड्स ईच अदर. कैसे? अब ध्यान से देखें इसे. While in other genera, such as cycas, small specialized roots called coralloid roots have an association with N2 fixing cyanobacteria. साइनोबैक्टीरिया साइकस में होगा. The stems of a gymnosperm can be branched or unbranched.
and the leaves can be compound as in cycas or simple as in ginkgo. जिंको बाइलोबा. Moreover, these leaves are well adapted to withstand extreme climatic conditions as seen in balsam fir. Its needle-like leaves reduce the surface area, which in turn reduces loss of water due to transpiration. Even the thick cuticle and sunken stomata on the leaves reduce the rate of water loss. Noted. The reproductive structure of a gymnosperm is called a strobulus or a cone. कोन्स, यहाँ भी कोन्स की बात करेंगे जैसे हमने टेरिडोफाइट्स में देखा था. तो दो स्ट्रक्चर आपके सामने आ गए, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के. नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे और जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म्स में. अच्छे से देखेंगे.